Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we will discuss Narco Test and Polygraph Test. You know both tests was in news recently. So let's talk about what is Narco Test and what is Polygraph Test. You know Polygraph, which is also called the lie detector test. Polygraph test को lie detector test भी कहते हैं. It is a procedure that measure and records several psychological indicators. जिसमें blood pressure होता है, pulse, respiration and skin conductivity while a person is asked and answer a series of questions. जब एक पर्सन से क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आंसर उसके बदले में जो आंसर बोलता है तो उसके रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड स्किन की कंडक्टिविटी चेक की जाती है. दिस इज कॉल्ड द पॉलीग्राफ टेस्ट एंड द लाई डिटेक्टर टेस्ट. एंड द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द assumption that a psychological response that are triggered when a person is lying are different from what they would be otherwise. उसके जो स्किन की कंडक्टिविटी, पल्सेस की कंडक्टिविटी, रेस्पिरेशन एंड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, तो इन सब का जो ट्रिगरिंग होती है वो डिफरेंट होती है व्हेन द पर्सन इज लाइंग एंड द पर्सन इज एक्चुअली स्पीकिंग द ट्रूथ. एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू इज असाइंड टू ईच रिस्पॉन्स टू कंक्लूड whether the person is telling the truth or is deceiving or is uncertain. And a test similar to polygraph was done in the 19th century. सबसे पहले ये टेस्ट किया गया था इन द 19th सेंचुरी बाय द इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट जिसका नाम था सिज़ेरो लोम्ब्रोसो, who used a machine to measure change in the blood pressure of criminal suspect during the interrogation. तो criminologist इसका नाम था सिज़ेरो लोम्ब्रोसो, who was first done in the 19th century and he was an Italian. एंड नेक्स्ट आता है नार्को एनालिसिस टेस्ट और नार्को टेस्ट. यू नो इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग, क्योंकि जहाँ पर वर्ड नार्को आ जाए तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद अ ड्रग, सोडियम पेंटोथल, which includes a hypnotic and sedated state in which subject imagination is neutralized and they are expected to divulge information that is true. This is called the narco analysis test. And the drug also referred to as a truth serum was used in larger dose as anesthesia during the surgery and is said to have been used during the World War II for the intelligence operations. इसमें होता है drug and the sodium pentothal. And recently investigating agency have sought to employ these tests in the investigation and sometimes seen as a bigger and being as a softer alternative to the torture और थर्ड डिग्री टू एक्सट्रैक्ट द ट्रूथ फ्रॉम द सस्पेक्ट. तो ये यूज़ किया जाता है, जो ये रिसेंटली भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में देखने को मिले. अब इसकी लिमिटेशन क्या है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द नार्को टेस्ट और द पॉलीग्राफ टेस्ट, व्हाट आर द लिमिटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, नन ऑफ दिस मेथड हैव बीन प्रूवन साइंटिफिकली 100% सक्सेस रेट. इसमें साइंटिफिकली कोई भी 100% सक्सेस रेट नहीं है एंड रिमेन कंटेंशियस इन द मेडिकल फील्ड एज वेल. एंड द कंसिक्वेंस ऑफ सच टेस्ट on individual from weaker section of society who are unaware of their fundamental rights and unable to afford legal advice can be adverse. And it may also involve future abuse, harassment and the surveillance and even leakage of video material of the press for a trial by the media. एंड अब बात करते हैं इसमें लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की. वेदर नार्को टेस्ट एंड पॉलीग्राफ टेस्ट, इसमें लीगल एस्पेक्ट्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट क्या है. यू नो इन द सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केस in 2010 the Supreme Court ruled that no lie detector test should be administered without the consent of accused. ओके एंड जो अक्यूज के कंसेंट के बगैर ये टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं हो सकता. एंड ऑल्सो दोज हु वॉलंटियर मस्ट हैव एक्सेस टू लॉयर and have the physical, even emotional and the legal implication of the test explained to them by police and the lawyer. And the result of the test cannot be considered to be the confession. इसमें ये नहीं कि जो results होते हैं उसको confess किया जाए, but information or material which is subsequently discovered with the help of such voluntarily test taken can be admitted as a evidences. And the Supreme Court cited article number 20 clause 3. You know article number 20 clause 3, a right against self incrimination, which states that no accused can be compelled to have a witness against himself. Okay, this is article number 20 clause 3, or right against self incrimination,
which states that no accused can be compelled to be witnessed against himself. And in the DK Basu versus State of West Bengal case in 1997, एक तो हमने यहाँ पर केस बताया 2010 का Salvi versus State of Karnataka, the Supreme Court ruled that involuntarily administration of the polygraph and the narco test will amount to cruel, inhuman, and degrading treat in the context of Article 21, right to life and liberty. Article 21, right to life and the personal liberty, and the polygraph and narco test will amount to cruel and inhuman and degrading treatment. And it may also involve the violation of a right to privacy, which is a part of the right to life, which is also called article number 21, and the Indian Evidence Act 1871. ये हम बात कर रहे हैं जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं एंड द लीगल एस्पेक्ट्स, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1871 डज नॉट एडमिट द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट एज एविडेंस. क्लियर? तो इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंगली जो भी इसके रिजल्ट्स होते हैं उसको हम एविडेंस के तौर पे उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो ये थे कुछ केस स्टडीज़ एंड लीगल एडवाइजेज एंड लीगल एस्पेक्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट. एंड द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, in 1919 adopt a set of guidelines relating the administration of the polygraph test, which include consent and recording of the test etc. तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है और इसकी अमेंडमेंट भी रिसेंटली 2019 में देखने को मिली थी. एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस or confession due to their limited reliability and the scientific proof, and however they can be used as a useful tool to solve complicated case as an investigating tool, and the government should encourage the use of scientific technique in the otherwise long investigate procedure trials, but should not come up with the strict rules for their use in the decent and the consensual manner. Okay, तो ये था नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट. पॉलीग्राफ में मैंने बता दिया इसमें क्या होता है, नार्को टेस्ट में क्या चीज़ होती है. ओके, तो वी हैव कवर्ड दिस बोथ टॉपिक इन दिस वीडियो. So this is for today in this video. Thank you and take care.